मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड पार्ट दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे रिलेटेड पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इनर्शिया, नाउ न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, दैट इज बॉडी ट्राइज टू बी इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई टू इट। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का मोशन टूटेगा, करेक्ट। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफाइंड इन अ सिंगल वर्ड एज इनर्शिया। नाउ इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका इनर्शिया इज नथिंग बट द मास ऑफ द बॉडी, करेक्ट। सो इनर्शिया इज बेसिकली अ रिजेम्बलेंस ऑफ मास in linear motion, correct. Now when I talk about rotational dynamics, I need to define inertia in terms of rotational motion, correct. So when example, I'll take a door, ठीक है, ये डोर ले लिया मैंने जो इस पार्ट के अबाउट हिंज्ड है। The hinge is fixed over here. ठीक है, so imagine now this door is rotating about this circular orbit, correct. ठीक है, so example, if the door is rotating and if I want to rotate the door by angle theta, I have to apply force at certain points on the door. I can apply force at this point, I can apply the force at this point, I can apply the force at this point, I can apply the force at this point, and I can apply the force at this point. In short, I can apply the force along this line at any point, but while applying the forces, the force will vary. Why? Because the movement of the door about the hinges does not only depends on the mass but also depends on the distance of the point of application of force from the एक्सिस। ठीक है, सो इस एक्सिस से इस आर डिस्टेंस का नाता है। ठीक है, खैर इसलिए मैं बोल सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है इट इज नथिंग बट द डिपेंडेंसी ऑफ, सो नाउ inertia for linear motion is mass, but in rotational motion inertia is not just only the mass, it is related to mass as well as the distance of point of application of force from the axis of rotation। ठीक है, सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्ट रिलेशन अगर हमें जानना है तो हमें अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, सो दैट आई कैन रिलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन whereas the kinetic energy of rotational motion। तो इन दोनों को हम लोग रिलेट करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक डेरिवेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे ये पता चलेगा दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ moment of inertia and relation between moment of inertia of linear, the relation between moment of inertia and inertia। So now I have considered a body in which I have taken n number of particles, जहाँ पे m1, m2 and so on the particles are resembled by m1, m2 and m3, now which are situated at distance r1, r2, r3 and so on till rn। ठीक है, अब ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो एक्सिस के अबाउट रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय सम एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। सो दिस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा से रोटेट कर रही है बॉडी। अब एक चीज इसमें सिंपल सी मैं बताता हूं कि जब भी कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो पूरी की पूरी बॉडी को रोटेट कर रही होती है, ना कि सिंगल पार्ट या सिंगल सिस्टम। नाउ एग्जांपल, इफ दिस पेन इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते वक्त ईच पार्टिकल इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, सो एवरी पार्टिकल हैज सेम एंगुलर मोमेंटम। नाउ consider m1, m2, m3 so on till mn the particles, consider r1, r2, r3 the distance of particles from its axis। now जबकि सारे particles इस axis के अबाउट घूम रहे हैं तो every particle will have its angular, अब जैसे कि इसमें सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं एवरी पार्टिकल इज सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। नाउ इफ द डिस्टेंस इज डिफरेंट आई कैन से दैट द लीनियर स्पीड इज डिफरेंट, सो लीनियर स्पीड is defined as v is equals to
r omega. Correct? Now this v is equal to r omega में मैं बोल सकता हूँ कि if I define the velocity of particle m1, it becomes v1 which is equals to r1 omega. Correct? Now considering omega is constant, because omega is constant for the whole system of the body, hence omega मैंने constant लेना है. v2 is equals to r2 omega, v3 is equals to r3 omega. Similarly I can say vn is equals to rn ओमेगा. ठीक है? नाउ ये पूरे कॉन्सेप्ट में अब मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली डिफाइंड एज हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. ठीक है? सो आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m1 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू m1 इनटू r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 particle is equals to half into m2 r2 square omega. Similarly kinetic energy of nth particle is equals to half into mn rn square omega square. ठीक है? सो ये लिख दी मैंने काइनेटिक एनर्जी. नाउ the total kinetic energy of the whole system is nothing but the summation of the kinetic energy of all the particles. यानी सारे particles का kinetic energy का summation will give me the total kinetic energy of the system. So I have to rub the board for that. So now total kinetic energy टोटल काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे m1, m2, m3 इनके सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर दिया. अब ध्यान से देखो, इसमें हम लोग हाफ इनटू m, अब ध्यान से देखो इसमें हम लोग हाफ इनटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. अंदर बचता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर. ठीक है? तो मैं इसको जनरलाइज करके summation of I is equals to 1 till n mi ri square लिख देता हूं मैं. ठीक है? So now this is nothing but the total kinetic energy of a rotating body. ठीक है? Now I'll compare this total rotational kinetic energy with linear kinetic energy. ठीक है? ठीक है? So linear kinetic energy is basically given as half mv square, whereas total kinetic energy of rotating body is given as half into omega square summation of I is equals to 1 to n mi ri square. ठीक है? So this is the basic concept of moment kinetic energy. अब मैंने यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हुए मैं बोल सकता हूँ कि half is analogous to half, v square is analogous to omega square. So I can say mass is analogous to summation of I is equals to 1 to n mi ri square. ठीक है? Correct? Now this mass is basically the moment. So this mass is the inertia of linear momentum. So this mass is the inertia of straight traveling, or I can say linear motion body, whereas which is analogous to summation of I is equal to n, I is equal to 1 till n. Sorry, please, I'm repeating. So now this mass is so this mass is analogous to inertia, whereas this mass is analogous to I is equal to 1 till n mi ri square also. So I can say if this mass is equal to inertia of a body which is traveling in a straight direction, whereas this is the inertia of rotating body.
So this inertia is also called as moment of inertia, which is the moment of inertia we define as the product of mass and the square of the distance of a particle from the axis of rotation. ठीक है? So as I said, summation of I is equal to 1 till n mi ri square is nothing but moment of inertia which is symbolically represented as I. So I is equals to summation of I is equal to 1 till n mi ri square. Kinetic energy is equals to half into m so kinetic energy is equals to half into I ओमेगा स्क्वायर. ठीक है? सो सिंपली हमने एक डेफिनेशन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया है, जहां पे I is moment of inertia, indirectly the product of mass and the square of the distance between the point of mass and the axis of rotation. ठीक है? सो गाइस नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल करेंगे, जिसमें सबसे बेसिक एग्जांपल लिया मैंने एक रिंग, जहां पे रिंग में सारे पार्टिकल्स, एग्जांपल मैंने m1 m2 ऐसे सारे पार्टिकल्स ले लिए, तो सारे पार्टिकल्स r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है सेंटर से. सो मैंने बोल सकता हूं कि सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन के हिसाब से आई कैन से समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 till n mi ri स्क्वायर. यहां पर सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस r है, तो ऑटोमेटिकली r क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. सो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 till n mi. Now if I add all the small particles of the ring, I'll get total mass of ring, correct? ठीक है? So total mass of ring is m, hence I'll get moment of inertia as mr square. So this is nothing but the moment of inertia of a ring. ठीक है? So बहुत सिंपल सा तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है. ठीक है? अब थोड़ा एक आगे का एग्जांपल लेते हैं. We'll take a disk which is rotating about the central axis. So now assume this as a disk which is rotating about the center. तो मैंने इसका moment of inertia find करना है. moment of inertia find करते वक्त if you have the discrete particles you can simply add it, but if you have a continuous body like this you cannot directly add the moment of inertia of different particles. So for that you have to integrate it. अब integration के लिए आपको सबसे पहले फैक्टर बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए मैंने एक आर्बिट्री रिंग कंसीडर किया है. ठीक है? सो मैंने एक आर्बिट्री रिंग कंसीडर किया है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है, वेयर एज द रेडियस इज कैपिटल R, द थिकनेस ऑफ द रिंग इज dr. ठीक है? सो ये पूरा कंसीडर कर लिया, जहां पे टोटल मास इज capital M. Now in this complete diagram I have the description of particle, जहां पे इस axis के बॉडी रोटेट हो रहा है. तो moment of inertia फाइंड करने के लिए the most important factor, the moment of inertia is defined as I is equal to 1 till n mi ri square. Now if the body is continuous I can say moment of inertia is equal to integration of dm into r square. ठीक है? Now for this case I need to find the value of dm. Now dm is nothing but this mass of the smallest possible particle. So I can say if this is the smallest possible ring which I have considered as a particle, the mass of this ring is dm. करेक्ट? सो इसका मास फाइंड करना है. तो मास फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है. आई जस्ट गिव अ सिंपल आइडिया, ब्रेक द रिंग एंड एक्सटेंड इट इन दिस पार्ट. ऐसे तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस इज गिवन एज 2 pi r, correct? Thickness is given as dr. So I can say the area is nothing but 2 pi r dr, correct? Now the mass dm, to find the mass of dm I can say mass of dm is nothing but mass per unit area into area of the ring.
correct? So I can say dm is equals to mass per unit area, that is 2 pi mass per unit area, that is dm is equal to m into so I can say dm is equals to m upon pi r square into area is 2 pi r dr, ठीक है? सो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 2m r dr अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज योर dm, ठीक है? नाउ अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square, which is integration of dm is dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2m upon r square r into dr into r square, ठीक है? अब यहाँ पे I have to decide the integrating factors from integrating range. अब integrating range decide करने के लिए मैंने ये इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है 0 से और खत्म करना है कैपिटल R से. So integration will start from 0 till कैपिटल R. So यहाँ पे इंटीग्रेशन जब 0 से स्टार्ट करके कैपिटल R पे करेंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में हमें 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है इस बारे में. अब यहाँ पर just erase that small part, please erase the mistakes. So यहाँ पर इस फॉर्मूले में से 2m बाहर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा r क्यूब dr, correct? Now from 0 to r. Now I'll rub this portion. Now the moment of inertia, sorry, please edit that. So I is equals to 2m upon r square integration of 0 to r cube dr. अब इंटीग्रेशन में मुझे पता है सिंपली इंटीग्रेशन कैसे करना है. इंटीग्रेशन ऑफ r रेज़ टू n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला मुझे पता है, which is इंटीग्रेशन ऑफ r रेज़ टू n is equals to r रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1. So ये हो जाएगा 2m upon r square into r रेज़ टू r raised to 4 upon 4 ranging from 0 to capital R. So upper limit substitute करेंगे minus lower limit substitute करेंगे, आपको moment of inertia की वैल्यू मिलेगी 2m upon r square r raised to 4 upon 4, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे moment of inertia ऑफ डिस्क मिलेगा mr square upon 2, ठीक है? सो ये इंटीग्रेशन मेथड से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकता हूं. इस मेथड से मैं किसी भी सिमेट्रिक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकता हूं, ठीक है? सो दो एग्जांपल्स देखने के बाद मैं एक रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बताता हूं, जहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है उस बारे में एक शॉर्ट में बताता हूं आपको. प्लीज कट द हेडिंग पार्ट, ठीक है? सो radius of gyration. Now what is radius of gyration? Basically mathematical method से मैं इंटीग्रेबल बॉडीज का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो ऐसे केस में मुझे अगर ग्राफिकली या फिर प्रैक्टिकली किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आई हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ radius of gyration. Now what radius of gyration is? Radius of gyration is nothing but the moment of the radius of gyration is nothing but the point at which the whole mass is supposed to be concentrated. Just an example, if I take a disk, ये डिस्क ले ली मैंने, इस डिस्क में मैंने मैथमेटिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, which is nothing but mr square by 2, correct है? Now if I consider this disk as a point mass, if I consider this disk as a point mass and the whole mass of the disk is situated at this point such that the moment of inertia of the point is equal to the moment of inertia of a disk, in that case the distance of the axis and the point mass is nothing but the radius of gyration. So बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूं मैं कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्लीज करता है. सो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि जैसे अगर मुझे रेडियस ऑफ gyration फाइंड करना है तो आप पूरे मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए such that you get the same moment of inertia as
mass equal to disk. ठीक है? So example, if I find K for disk and I can say moment of inertia in terms of radius of gyration is equals to mk square, where which is equals to mr square by 2. So in that case K is equals to r by root 2. So this is nothing but the radius of gyration for disk. ठीक है? समझ में आया?